नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बैटलिंग क्राइसिस, श्रीलंका सिक्योर्स फर्स्ट IMF ओके फॉर 2.9 बिलियन लोन विद रिफॉर्म्स रोड मैप। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रीसेंट लोन अप्रूवल टू श्रीलंका एंड वी हैव टू नो अबाउट द IMF। जो IMF का ब्लूप्रिंट है उसकी हाइलाइट्स हैं। Major reforms in income tax and VAT, cost recovery based pricing for fuel power, restore market based foreign exchange rate, ensure adequately capitalized banking system and reduce corruption vulnerabilities। अगर हम मेजर मिशंस ऑफ IMF की बात करें, इसका पहला मिशन है furthering international monetary cooperation, दूसरा है encouraging expansion of trade and economic growth and discouraging policies that would harm prosperity। Our next important headline is Indigenous cervical cancer vaccine ready, set to be part of government's immunization drive। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 हेल्थ से। इस आर्टिकल में हमें जानना है सर्वाइकल के बारे में एंड सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इन दोनों को हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वेबसाइट पे कवर किया है और लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें तो जो सर्वाइकल है इट वाज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विद सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम सर्वाइकल केसेस की बात करें इन इंडिया में तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 5th ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सीइंग 1.25 लाख केसेस एंड 75,000 डेथ्स ईयर। ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज PM2 कमीशन विक्रांत अनवेल naval-ensign टुडे। ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है INS विक्रांत के बारे में और जो नया naval-ensign है उसके बारे में। तो इन दोनों का ही लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। Our next important headline is enrollment dip to go on in keeping with fall in child population growth rate, NCERT study। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 एजुकेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आल्सो नोन एज NCERT ऑन स्कूल एनरोलमेंट। तो अगर रिसेंट फाइंडिंग की बात करें तो स्कूल एनरोलमेंट इन प्राइमरी क्लासेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन 2011। This trend is set to continue until 2025. Council has attributed this dip enrollment to fall in growth rate of India's child population. Similarly, upper primary and secondary stages started witnessing a decline in enrollment in 2016 and 19 respectively. अब ये जो रिपोर्ट है इसकी significance क्या है? It will help policymakers to frame appropriate policies and programs. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज माइंडिंग द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 जुडिशरी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जुडिशियल राइटिंग, इश्यूज लिंक्ड टू इट, मेजर केसेस एसोसिएटेड विद इट एंड सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। Recently, Supreme Court has set aside an incomprehensible judgment of Himachal Pradesh High Court and advised the judges to maintain lucidity and brevity in their writing. Supreme Court touched on the aspect of judgment writing and reminding judges that their verdicts must make sense to those whose lives and affairs are affected by the outcome of the case. ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज परस्यूट ऑफ ग्रेट पावरहुड। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द साइनो अमेरिकन कॉन्टेस्ट एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलेमा। तो बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट्स को इस आर्टिकल में राइटर ने एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज UN accuses Beijing of Uyghur right abuses। ये अवेलेबल है पेज नंबर 15 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस आर्टिकल में जाना है who are Uyghurs, why are they facing issues, accusation on China, response of global community and India's response in this context। तो इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है और लिंक उसका अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज Buyency in direct tax collections if it continues could cross budget targets। ये अवेलेबल है पेज नंबर 17 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी से। इस आर्टिकल में जानना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है एंड व्हाट हैज बीन द डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड सो फार। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन pays directly to the entity that imposed it. We can say that it is a type of tax where the incidence and impact of taxation fall on the same entity। और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं एक कोट के साथ जो कि क्या है? Hold the vision and trust the process। Thank you।